सर आ जाएंगे अब। कब कब आएंगे भाई? सर इंशाल्लाह आज से आएंगे। इंशाल्लाह की टोपी दे रही हो, कितने दिनों से क्या कर रही थी? नहीं नहीं सर, इंशाल्लाह की टोपी नहीं, वो मैथ्स के बाद जो है ना, वो थोड़ा आराम था एक दिन का, उसके बाद अब अरे आएंगे। साले, इंसान बनो। आराम आराम बाद में करना, 20 तारीख के बाद आराम करना। अभी अभी पढ़ते रहो भाई। ऐसा मत करो यार, सब इधर उधर हो जाएगा। जी जी सर, अब आ जाएगा पेपर आज इंशाल्लाह। चलो डन हो गया, डन हो गया। अच्छा जी। सो परसेंटेज एंसरिटी एक बच्चे ने, इमाद से मैंने कल किससे करवाया था परसेंटेज एंसरिटी? दूसरा कर रही थी मेरे ख्याल मुझसे। से। अच्छा, तुमसे क्या था, आज इमाद करेगा। इमाद बेटा, ये जरा क्वेश्चन रीड कर लोगे? In the following list, underline all the units that are SI base units. Sir, kilogram and ampere. ओके, आगे आ जाइए। Figure 1.1 shows a horizontal beam clamped at one end with a block attached to the other end. The block is made to oscillate vertically. The Young modulus of the material of the beam is given by this ओके, equation. A student determines the values and percentage uncertainties of K, M, and T. सही है। Calculate the percentage uncertainty in the value of E. हम्म, क्या करेंगे भाई? So अच्छा, you add everything एवरीथिंग। and you multiply T by 2, like हाँ, the ओके percentage ओके, uncertainty. फाइन फाइन। तो यहाँ पे इतना सही बता रहे हो, पेपर में पता नहीं क्या किया था, है ना? वो ऐड अप नहीं किया था आपने। ओके, सो ई इक्वल्स टू, ओके हमारे पास है परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन के प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन एम प्लस परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन टी स्क्वायर्ड, ओके, 2t। सही है। सो दैट विल गिव यू 2.1 प्लस 0.6 प्लस 3, राइट? सो 5.1, 5.7, 5.7%। ओके, आगे आ जाइए। Use your answer in BI to determine the value of E with its absolute uncertainty to an appropriate number of significant figures. Okay, most of the students lose mark on the appropriate number of significant value part, पे, right? Okay, fine. Mm, okay, so they mentioned the value of young modulus as well. Okay, so you can use the formula directly. E is equals to K, क्या चीज थी? K, अबे यार फॉर्मूला, K M over T, okay, K M over T squared। अबे यार नहीं लगाना है ना फॉर्मूला, कुछ भी नहीं करना है इसका। डेल्टा So use E the normal They've over formula. given T, E, right? sorry, they've given us, yes, They've given E. they have given E, okay. So 8.245 exponent 9 is the E value, okay. So we can just use it, okay. So okay, so the delta E is to be found, okay. 5.7% is the error, okay, divided by 100, okay, into 8.275 exponent, I think 9, 8.245 exponent 9 to 45 exponent 9, okay, निकाल दोगे प्लीज, हाउ मच? Around 4.7 exponent 8 or 9. No, wait. ओके, Um, 8, yeah, 8, I think. 4.7, ओके, एक्सपोनेंट 8, यस। जरा एक काम करो So it is जल्दी से। अबे एक मिनट रुक, जल्दी से एक काम करो, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में आओ जल्दी से सारे, मुझे सारे आंसर लिख के बताओ जल्दी से, कैसे लिखोगे? हाउ विल यू राइट द आंसर? राइट इन हियर, क्विक, कम ऑन। हाउ विल यू गाइस राइट द आंसर फॉर द अनसर्टेनिटी? ओके, और व्हाट अबाउट द वैल्यू ब्रो? के बाद व्हाट अबाउट द वैल्यू? वैल्यू भी तो लिखो साथ में, प्लस माइनस के साथ लिखो ना। दूसरा कहाँ हो? इरफान, वेयर आर यू?
Uh, Okay. so it said into 10 to the power 9 Pascal, right? So we Yes. can just do 5.0 as the absolute uncertainty. Okay. And what about the value then? Value we can just wait 1 second. Value we can just write Sure. 8.245. 8.245. No, इनकरेक्ट यूसरा, इनकरेक्ट। क्या कर रही हो यूसरा, क्यों ऐसे बोल रही हो? दोनों गलत बोल रहे हो। Guys, you should Sir, how have is to 5.0 correct? सर not आपने कहा था correct. वन हाँ। सिग्निफिकेंट फिगर तक होता है ना, तो Yes. एट Mm-hmm. पॉइंट टू लिखेंगे बस। अरे मेरा बच्चा, you also have to consider the same power of 10. Okay. So it has the जीरो ninth पॉइंट फाइव power. होगा फिर वहां पर, जीरो Yes. पॉइंट फाइव इंटू टेन टू द पावर नाइन। हाँ। ओ सो अच्छा, देखो सही ना, सही। आप देखो ना, उसने आपको लगा के दिया हुआ दैट दे मेंशन exponent 9. So you have to do 0.5. Okay, now 0.5 contain 1 dp. Okay, 1 dp. Okay, so your value of e should contain 1 dp as well. So 8.2 only. Everyone clear? Yusra, Irfan? Yes, please. जी सर। सही है। चलो, आज भी यusra, ये आपने करना है। A sphere is attached by a metal wire to the horizontal surface of the bottom of the water as shown in figure 2.1. The sphere is fully submerged and is in equilibrium with the wire at an angle of 68 degrees to the horizontal surface. The weight of the sphere is 32 Newton. The upthrust acting on the sphere is 280 Newton. The density of the water is 1 into 10 to the power 3 kilogram per meter cube. Assume that the force on the sphere due to the water flow in this is horizontal direction. By considering the component of the force in the vertical direction, determine the tension in the wire. पहले तो ये बताओ कि इक्विलिब्रियम का मतलब। मतलब सारी फोर्सेस इक्वल एक्ट करेंगे। ओके, इक्वल एंड अपोजिट। ओके फाइन, चलिए क्या करेंगे आप? सर इसमें अरे, कन्वेंशन बनाएंगे कि इक्विलिब्रियम और ये सब चीज़ों को इक्वेट करेंगे इस तरह से। लेकिन टेंशन लगेगी कहाँ पे? सही है, सही कह रहे हो। अपवर्ड्स एक्ट करेगी है। अगर टेंशन वायर पे हम। अपवर्ड एक्ट करेगी, अब थ्रस्ट भी Uh, अपवर्ड एक्ट कर रहा है, वेट इज द ओनली फोर्स एक्टिंग डाउनवर्ड, देन प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा? टेंशन, मेनली जो टेंशन होती है दैट मेनली एक्ट टुवर्ड द फिक्स uh, पॉइंट, राइट? तो मतलब वाटर की तरफ नीचे ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगी। टू मी फिक्स पॉइंट तो वही होना। टू मी यस, बना के देखते हैं कि भाई इसमें क्या बन रहा है, क्योंकि फ्लो फ्लो का डायरेक्शन ये है, राइट? सो इट्स मीन कि यहाँ पे आपके पास जो है वो ये होगा। सही है। This is the direction of uh, flow. Where is this much? And if we take the tension, अच्छा, up this is that is in that way. we By can the do way, hmm so we can tension plus weight is equals to the upthrust. Can we do that? It's in why, equilibrium, why, right? why? How will you identify the direction of tension, or how are you identifying the direction of tension? This is the problem. Mm, not sure. Due to the water flow is horizontal, so we have to apply the tension in the opposite direction, and it it can either be upward, नो, अपवर्ड नहीं हो सकती है अगर हम, इट शुड बी डाउनवर्ड, टू मी इट शुड बी डाउनवर्ड, बट लेट्स सी, देखते हैं क्या बनता है। टू मी इट शुड बी डाउनवर्ड। ओके, एंड बिकॉज टू मेंटेन द इक्विलिब्रियम, ओके वी हैव, चलो अगर हम देखें 280 डाउनवर्ड फोर्स आ रही है, राइट, विच इज द वेट ऑफ द, अच्छा ओके, नहीं अपवर्ड लगनी पड़ेगी। ओके, सो बिकॉज 280 इज अ डाउनवर्ड फोर्स एंड there's other force. The weight of the sphere is 32. 32 are you downward, okay? And the sphere acting, okay. The upthrust acting on the sphere is 280, okay. 280 आ रहा है upthrust, okay. इसका मतलब ये है कि if the upthrust is like
much greater than weight. Okay, this means the tension should be in this direction, right? To add up with the upthrust, to become equal to the to add up with the weight to become equal to the upthrust. Okay, is that clear, guys? So इसके दो कंपोनेंट जो आप बनाओगे अब वो आप इस तरह से बनाओगे. फर्स्ट कंपोनेंट, ओके, टी आपके पास हो जाएगा cos 68, okay, and then t sin 68. Okay, chalo. Guys, is that clear? Irfan, is that clear? Yusra? जी सर. Okay, so since we are considering the vertical component of the forces, so t sin 60 plus 68 है basically. 68 सही है, और प्लस 32 इक्वल्स टू 280. गुड हो गया. सो टेंशन यहाँ से आ जाएगी So this is what I said. टू. ब्रो यू डोंट नो द रीजन ना, दिस इज द प्रॉब्लम. आई वाज आस्किंग द रीजन. Oh, okay, fine. ओके, यस, हाउ मच? 267.4. 267 टू 270 हो जाएगा. ओके, आगे आ जाओ. For this sphere, calculate the volume. ओके, इसमें तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगाएंगे ना इसमें, किस चीज का? स्फेयर का. स्फीयर का कैसे, क्या मतलब? रेडियस तो दे नहीं रखा. 4/3 क्यूब से तो नहीं आएगा ना. रेडियस दिया हुआ है ना वॉल्यूम दिया हुआ है. यू कैन रादर यूज द डेंसिटी अपथ्रस्ट का वाला फॉर्मूला. फॉर्मूला. अपथ्रस्ट अच्छा वाला हाँ, लगा लेना थ्रस्ट वाला यार. फॉर्मूला, हाँ सही है. ओके, सो अपथ्रस्ट इज इक्वल्स टू रो जी वी. ओके, सो रो आपके पास है, रो आपके पास है 1000. सही है. जी आपके पास है 9.81. अच्छा, वॉल्यूम हम बेसिकली लिक्विड का लेंगे. ओके, जी और सर. since it is fully submerged, so the volume of the sphere and the volume displaced by the water due to the sphere will be the same, right? And ये आपके पास आ गया, so this will be upthrust. Okay, how much? अच्छा, upthrust by the way दे रखा है हमें 32 हमें दिया हुआ. Hmm, wait. Upthrust 280, sorry my bad. 280. Okay, निकाल दो कितना आ रहा 0.028 आ रहा है. है. ओके, जीरो जीरो पॉइंट जीरो पॉइंट एट टू फाइव हाँ 8. सही है. फाइव आ रहा है तो राउंड ऑफ नहीं होगा. 0.285. 0.285. 85. सो 29 कर लेते हैं ना. 0.29. ओके, आई थिंक ये भी राउंड ऑफ ही कर रहे होंगे. 0 to 9 एक ज्यादा आ रहा है ब्रो. 0.029 आ रहा है. चेक कर लोगे जी प्लीज? सर, जी सर, 0.0 आगे, हाँ आ गया, ओके. सही है. कुछ कर दिया था मैंने. द डेंसिटी निकालेंगे अब, डेंसिटी. अब तो डायरेक्ट um, डेंसिटी. सही है, फॉर्मूला लगा लेते हैं. सो डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास ओवर वॉल्यूम. सो अच्छा जी. अच्छा, यहाँ पे डेंसिटी पानी की दी हुई है, बट वी डोंट हैव टू यूज द डेंसिटी ऑफ द वाटर, राइट? बिकॉज वी आर वर्किंग फॉर द डेंसिटी, वी आर वर्किंग फॉर द स्फीयर. ओके, so we know the weight. Okay, the weight of the sphere is 32. Okay, so mass would be 32 divided by 9.81. Okay, okay, this will give me the weight. Okay, sorry, mass. So 32 divided by 9.81, and the volume that we just calculated in the previous part. 112.48. 112.11, 100. तो हम 110 ले लेते हैं. 110. ओके, आगे आ जाइए. The center of the sphere is initially at a height of 6.2 meters above the horizontal surface. The speed of the water then increases, causing the sphere to move to a different position. This movement of the sphere causes its gravitational potential energy to decrease by 77 joules. Calculate the final height of the center of the sphere above the horizontal surface. हम्म,
क्या करेंगे? सोच रहे हैं, समझ नहीं आ रहा अभी इसमें क्या करना है, वापस पढ़ रही थी मैं क्वेश्चन। ओके। अच्छा जी, इन्होंने कहा है द सेंटर ऑफ द स्फीयर इज इनिशियली एट द हाइट ऑफ दिस मच, ओके, and they mentioned that the decrease in the gravitational potential energy is given, GPE is given, right? So, okay, so the decrease in GPE is this much, okay, mass आपके पास आ रहा है, यहाँ से आप निकाल लोगे मास, ओके, सो 32, अच्छा एम जी वो पूरा दिया हुआ है तो हम 32 ही ले लेते हैं, सही है, एंड वी डोंट नो द चेंज इन हाइट, ओके, सो जस्ट फाइंड आउट द चेंज इन हाइट फर्स्ट. 2.40 आ रहे हैं, 2.406 मतलब से 4 2.40. लिखेंगे। अभी फिलहाल तो वो नहीं करे, राउंड नहीं करे. अब इन्होंने कहा कि भाई फाइनल हाइट निकालनी, इनिशियल हाइट वाज 6.2, राइट? अब अगर हमने फाइनल हाइट निकालनी है तो आप क्या करोगे भाई? इनिशियल में से, हाँ इनिशियल में से माइनस कर देंगे। सही है. सो अच्छा याद रखना कि फाइनल माइनस इनिशियल तब होता है कि व्हेन यू आर इंक्रीजिंग समथिंग, और इनिशियल माइनस फाइनल होगा व्हेन यू आर डिक्रीजिंग समथिंग, राइट? सो अच्छा, एच इनिशियल माइनस एच फाइनल is equals to change in height. Okay, so h initial is 6.2, h final आपको नहीं पता, um, and is equals to 2.4. Okay, so आप कर दोगे 6.2 minus 2.406 कर लो अगर करना है तो, that gives you h final. Okay, and due to this decrease I do this. Yes, थ्री कितना आ पॉइंट रहा सेवन नाइन 3.794। है? Okay, so 3.8 कर लेते हैं, चलो आगे आ जाइए. The extension of the wire increases when the sphere changes position as described in C. The wire obeys Hooke's law, state a simple equation that gives the relationship between the tension T in the wire and the extension X. Label any other symbol that you may use. That you हम्म, use. क्या होगी? F is equals to KE वाला लिखेंगे हम। अबे अबे अबे, ओके, बट उन्होंने जो चीज दी है उसी को कटा दिया तुमने. स्टेट अच्छा, ब्रो टेंशन को टेंशन T। इस्तेमाल करो ना इंस्टेड ऑफ फोर्स, समझ रहे हो ना? जी जी सर। सही, प्लीज बी केयरफुल कि जब भी उसने कोई डेरिवेशन करने को दिया हुआ और एनी लाइक गिवन ए स्टेटमेंट दैट कंटेन लाइक उनके अपने वेरिएबल, राइट? सो यू हैव टू यूज दोज वेरिएबल that is being given in the question or mentioned in the question, okay? And k is like the unknown thing जो आपको explain करना होगा, आप कह दोगे कि भाई springs constant. ओके, चलिए आगे आ जाइए. For the sphere change position, the initial elastic potential energy of the wire was 0.65 joules. The change in position of the sphere causes the extension of the wire to double. Calculate the final elastic potential energy of the wire after the sphere has changed its position. हम्म. ओके. इसमें इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला यूज करेंगे और इससे निकालेंगे आई गेस। अच्छा, उन्होंने इनिशियल एनर्जी दी हुई है, दी सही हुई है. है हाँ। और और इन्होंने फाइनल कहा कि पूछ रही है। और फाइनल आपसे कह रहे हैं कि जो है ना ये एक्सटेंशन जो है वो डबल हो रही है, सही है. सो अगर हम रिलेशन देखें, सो इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी इज बेसिकली इज इक्वल्स टू हाफ के एक्स स्क्वायर्ड, ओके. सो आपको पता है कि के एंड 1/2 एंड के रिमेन्स द सेम, राइट? क्योंकि लाइक द स्ट्रिंग इज द सेम, राइट? सो वी नो दैट इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी is basically directly proportional with x squared, okay? So you can use this proportion for the solution, okay? So यहाँ पे क्या बन जाएगा? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में हमारे पास आ जाएगा, इनिशियल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी थी 0.65, एंड लेट्स से जब एक्सटेंशन थी 1 की, राइट? एंड फाइनल इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी है, वी डोंट नो द एनर्जी, ओके, बट yes, the extension got doubled, okay? So you can just do 0.65 into 2 का स्क्वायर, ओके. 2.6। ओके, 2.6, कहानी सही जा रही है हमारी. 2.6, ओके, सही जा रही है, चलो.
आ जाओ भाई, बोले मत क्या कह रहे हो? Sir, can you go back to part C? हम्म। पार्ट सी। यस। Sir, we can also use like we find the energy at 6.2 meters, then subtract it by 77 and find the height. Can we use that? एक्चुअली यस। Okay. मतलब you can take 6.2, okay, and you do mgh, putting 6.2 in it, okay. So you'll get the initial gravitational potential energy, right? And you have the initial energy, right? Initial energy, right? Minus the final, since you are decreasing, okay, so initial minus final करोगे, okay. Decreasing means कि initial minus final, or increasing mean final minus initial, okay. And final energy is equals to the change in energy, right? So you put mg, and in place of h, in place of h you put 6.2, and then change in energy would be 77, right? And then when you solve you'll get this answer, okay, clear ना? और फिर उससे वहां से आपको दोबारा से उसको सब्जेक्ट बना के ये निकालना होगा। क्लियर हो गया भाई? जी sir. आ जाओ भाई, जरा रीड कर लो ये। बल्कि ये उससे करवाता है, एक मिनट एक मिनट, ये इरफान करेगा। इरफान, यू हैव टू ट्राई दिस। Okay. A man standing on a wall throws a small ball vertically upwards with a velocity of 5.6 meter per second. The ball leaves his hand when it is at a height of 3.1 meter above the ground, as shown in figure 3.1. Assume the air resistance is negligible. Show that the ball reaches a maximum height above the ground of 4.7 meters. ओके, यू नो द इनिशियल स्पीड इज 5.6, ओके. 5.6. You know that the acceleration is how much? And you know that the final speed would be 0 at maximum height, okay? And the acceleration would be negative 9.81, okay? So you have to find s, okay? So that would be 2as is equals to v square minus u square, okay. Since it is a show that question, so in a show that question be very careful, make as the subject and also show it, okay. So 0 minus 5.6 ka whole squared, okay, divided by 2 over 9.81, okay. Now solve it. 1.59. Okay, so 1.59. Yeah. How? You have to show 4.7. Sir, you add 3.1. Acha, sorry, yes, 1.59, okay, and then Yeah, you have plus, to add 3.1. that gave you 4.7. Okay, let's move on. The man does not catch the ball as it falls. Calculate the time taken for the ball to fall from its maximum height to the ground. So maximum height v is equal to 0. Okay, Wait. bro, उसने कहा the man does not catch the ball as it fall. Calculate the time taken for the ball to fall from, okay, fine, from its maximum height. So initial velocity is 0, acceleration Yeah. is 9.81, okay. Final, acha, the height is 4.7, okay, and you have to find the time, okay. So you can use s is equals to ut plus half at square, okay. So ut will be 0, okay, and half a into a is 9.81, t is to be found, okay, and s is 4.7, okay. How much?
Yes. 0.958. Oh no, that's 0.95. not. Wait, I didn't square it. I didn't square it. You Square have root to it. root it. 0.978. 0.978, so 98. Okay, fine. So move on. The ball leaves a man's hand at time t is equal to 0 and hits the ground at time t is equal to t. On figure 3.2, sketch a graph to show the variation of velocity of the ball with time t from t is equal to 0 to t is equal to t. Numerical values for v and t are not required. Assume that v is positive in the upward direction. V is positive in the upward direction. Okay, fine. So yeah, okay. The first thing that they didn't mention the x-axis or y-axis value, which mean you don't have to be very specific in the graph, but you have to draw it approximately, right? This is the first thing. Now the second thing is you have to consider three things while sketching it. Okay, so can you guys sketch the graph for me? 3 mark का है. Just sketch it on your copy, right? जो भी बन रहा है बना दो and take a picture and send me quick. Everyone, सबने करना है. हाँ जी, done. भेज दिया सर। Okay, let's see. अबे भाई, wait. Hmm. Okay, acceptable. इमाद, युसरा कहाँ हो? युसरा, तुम्हारी कोई चीज नहीं आ रही है युसरा. बहुत लेट कर रही हो. सर एक मिनट, मोबाइल चार्ज पर लेकर तो आऊँ मैं पिक्चर के लिए। अरे यार, टोपी में तो खत्म ही नहीं हो पा रहे. सर सच में रॉजर. मैं ऐसी बैठी हुई थी ना, मेरे पास कॉपी वॉपी थी ना कुछ, उठा अभी चीजें उठा रही है। अबे मैं सॉल्व कर रही थी साथ साथ। यार. अच्छा रॉजर, आओ जल्दी से, आ गई. So 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 तो 5. ओके, इमाद ने बनाए हैं. एंड इमाद 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 इमाद. ओके फाइन, एक्सेप्टेबल. एक्सेप्टेबल. इरफान, वेयर आर यू इरफान? कम ऑन क्विक. ये कहाँ रह गए हो? Sir, in my graph, like the time for max height, it should be one box behind, right? Not necessarily to be. You don't have to be very accurate. It can be random. No, but like because it's traveling 1.6 meters upwards and around around like 4.7 downwards. That's why. मैं बता दूं कि क्या इसमें क्या चीज़ को आपने ध्यान में रखना है. इरफान, वेयर आर यू इरफान? कम ऑन. Yeah, 1 second. युसरा. मैं बस आपको पिक्चर सेंड कर रही ओके.
अच्छा जी। शाबाश। ब्रो शर्म नहीं आ रही ऐसे बनाते हुए? इरफान, यू डिडंट सेंड येट? अबे कद्दू। Yeah, I'm sending. I'm sending. One second. क्विक क्विक क्विक। इट शुड बी लाइक दिस। सॉरी, नॉट कर्व, स्ट्रेट सर लाइन। ये कैसा ग्राफ हुआ? अल्लाह। सर ऐसे तो नहीं होना चाहिए, पहले डायरेक्ट इसमें तो अजीब ही लग रही है सर। है ना? मुझे एक कुछ बात ज्यादा ही बताओ, अजीब। मुझे एक बात बताओ, इस सर मोशन के अंदर, इस मोशन के अंदर जो एक्सेलरेशन है वो क्या हम ले रहे हैं? -9.81 माइनस न्यूटन। 9.81 और प्लस 9.81, विच इज जी। द वैल्यू ऑफ द ग्रेविटी, ऐसे ही? ग्रेविटी। जी। ओके। आप बना रहे हो स्पीड टाइम ग्राफ, ओके? आपने स्पीड टाइम ग्राफ का ग्रेडियंट क्या शो करता है? एक्सेलरेशन, राइट? विच इज द ग्रेविटी एक्चुअली, राइट? आपकी ग्राफ में एक पोर्शन ऐसा भी आया है जहां अल्लाह के फजल से ग्रेविटी गायब हो गई है, सही है? जो आपने ये वाला पोर्शन शो किया है वहां पे तो ग्रेविटी गायब है, क्योंकि वहां पे तो कांस्टेंट वेलोसिटी आ गई है। समझ रहे हो? सर सर एक पॉइंट पर जब बॉल कांस्टेंट नहीं होगी उसकी, मतलब जब वो होगी तो उसकी मतलब सबसे ब्रो। टॉप पोजीशन पे जब हाँ होगी वो हाँ। तो वेलोसिटी बच्चा उसकी जीरो हो जाती है ना, वेलोसिटी। जीरो हो जाती है, कांस्टेंट थोड़ी होती है, जीरो हो जाती है। इट अच्छा सीम्स हाँ लाइक जीरो इट इज सही है, तो जीरो को शो मोमेंटेरली एट रेस्ट, ये आ गया ना, ये श्योर है जीरो यहाँ पे आ रहा है। समझ रहे हो आप? हाँ सही है सही है सही है। देखो, ओके। तीन चीजों का आपने यहाँ पे ध्यान रखना था। द फर्स्ट थिंग, दैट यू हैव टू स्टार्ट द ग्राफ फ्रॉम द पॉजिटिव, ओके, एंड इन द नेगेटिव पोर्शन, दिस इज द फर्स्ट थिंग, राइट? बिकॉज उसने कहा था कि भाई टेक वर्टिकली अपवर्ड एज पॉजिटिव, राइट? द सेकंड थिंग, you have to show the time for going up the ball should be smaller than the time for going down the ball, for coming down the ball. Okay, so this is the time when the ball will be going upward. Okay, and this will be the time where the ball will be coming downward. Okay, and it is greater than that, क्योंकि आपने निकाला है कि 0.98 है। अगर आप वर्टिकली अपवर्ड कॉल तो निकाले तो नहीं, लेकिन निकाल के तो छोटा आएगा, राइट? बिकॉज आप यहाँ से फेंक रहे हो, कॉमन सेंस है, यहाँ से फेंक रहे हो और ये ऊपर ज्यादा जा रहा है, नीचे कम जा रहा है, राइट? And the third thing is you have to mention that your starting velocity should be smaller than your ending velocity. Okay, because the ball travel greater distance in the gravity acting downward than in the gravity acting like moving upward, जब ball ऊपर जा रही थी, right? So ये आपके पास concept है. Okay, so okay, fine. Do we have to show the values like specifically? Nope, they didn't No. Okay. mention. I wrote point 0.9. Where? 0.9. Okay, you don't have to. Point 0.9, point No, 0.9 no, won't be nothing, nothing. anywhere. T won't be zero point 0.9, okay? Be careful. 0.9 is only Yeah. Okay. this time, okay? Fine. Khair. आगे आ जाओ. Yes, please read the Okay. question. State what is represented by the gradient of the graph in C. Hmm. Acceleration of the ball. Okay, let's move on. Yeah. Sorry. The man now throws a second ball with the same velocity and from the same height as the first ball. The mass of the second ball is greater than that of the first ball. Assume that air resistance is still negligible. For the first and second ball, compare the magnitude of their acceleration. Yes. Uh, for the first ball will be the magnitude will be smaller, right, than the And second. why? Because actually no, it Bro, will be larger because it if will take both more are time to moving, accelerate. if both are moving under the gravity without any air resistance, this means that you won't have to consider any value
or like the weight or the mass would be like useless in this case because the air resistance is negligible. Okay, the concept that you are applying only possible or acceptable when there is a air resistance in it. Okay, clear? Yeah, okay. 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 What about the other one? The speeds would they hit the ground. If the acceleration over the same, so the speed should also be the same. Okay. Same speed, right? Yes, Because it's the acceleration is same. constant. Yeah, okay. You just need to make sure, you just need to know what is the difference between moving without any air resistance and moving under the air resistance. You know that every equation of motion is independent of the mass, right? So if you increase the mass, if you decrease the mass, since you are moving under without any air resistance, so कोई भी आपके पास जो एक्सेलरेशन होगी वो चेंज नहीं होने वाली है. खैर, आ जाओ भाई. इमाद, जॉर्डन. बल्कि नहीं, इमाद ने कर लिया है. यूसुफ करेगा, यूसुफ. Okay. State the principle of conservation of momentum. Sum of momentum before and after collision is constant in a closed system. Okay. Sum of all the momentum, okay, of interacting interacting bodies before and after the collision should be same, okay, in an isolated system. Okay, चलो आगे आ जाओ. Yes. Okay. Two balls, X and Y, move along a horizontal frictionless surface as shown from above in figure 4.1. Ball X has a mass of 3 kgs and a velocity of 4 meters per second in the direction of angle theta to line AB. Ball Y has a mass of 2.5 kgs and a velocity of 4.8 in the direction at angle theta to the line AB. Balls collide and stick together. After colliding, the balls have a velocity of 3.7 along the line AB on the horizontal surface, as shown in figure 4.2. By considering the components of the momenta along the line AB, calculate theta. तो Along the बिकॉज line AB. यहाँ अच्छा. पर हम्म. बिकॉज यहाँ पर सिर्फ उसमें हो रहा है ना, लाइक वर्टिकल डायरेक्शन में नहीं हो रहा, सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में हो रहा है. ओके. तो हम पहले फाइव इन दोनों के मास को प्लस करके 3.7 से मल्टीप्लाई कर देंगे. अरे. फिर थ्री ओके. इंटू फोर कॉस थीटा प्लस 2.5 इंटू 4.8 कॉस थीटा इज इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर कोलिजन 5.5 में 3.7. फिर बस ओके. सॉल्व कर. 4 cos थीटा ये आ गया सही, और फिर इनके मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं. ओके. So since both are moving in the same direction, so 4 cos theta, this is the component of the velocity times it by mass, okay, plus 2.5 into 4.8 cos theta, okay, is equals to 3.7 the velocity times the addition of both the masses, 2.5. 5.5. Okay, perfect. Now You get just 12 cos theta plus 12 cos theta. 12 cos theta plus 12 cos theta is equals to something. Okay, so ये हो जाएगा 24 20.35. एंगल, No, इसकी no, वैल्यू the value of 20.35. the Okay, then cos theta would be 20.35 divided by 24 and then do cos inverse, you get 32. 32. Perfect. Okay, गुड हो गया. चल आगे आ जाओ. By calculation of the kinetic energy, state and explain whether the collision of the ball is inelastic or perfectly elastic. So half into mv square ये होता है. फिर बस half into m की क्या थी? अच्छा, पहले तो आप कह रहे हो थ्री. कि इनिशियल निकालने. जी. सही है. So वो आप कह रहे हो कि हाफ इंटू, so the first one was 3 and the velocity was 4 squared.
प्लस हाफ इंटू Yeah. 2.5 प्लस इसकी वेलोसिटी थी 4.8 राइट स्क्वायर, दिस इज द इनिशियल एंड फाइनल के लिए हाफ इंटू 5.5 इंटू 3 पॉइंट समथिंग 3.7 का स्क्वायर। ओके, हाउ मच? एक second. For the first one, you get 52.8. ओके, For the second one, एक minute. For the second one, you get 37.64, so it's inelastic. is lesser than initial ke, so 32 or 37.6. 37.6। okay, so inelastic। ओके जी, आगे आ जाओ। वेव वाला किसी का वीक है? एनीवन वांट टू ट्राई द वेव क्वेश्चन? यस, एनीवन वांट्स टू ट्राई द वेव क्वेश्चन? फिर मैं कर लूँ। ओके प्लीज। Light from a laser is used to produce an interference pattern on the screen, as shown in Figure 5.1. The light of wavelength 660 nanometer is incident normally on the two slits that have a separation of 0.4 millimeter. This double slit is parallel to the screen. The perpendicular distance between the double slit and the screen is 1.8 meters. The central bright fringes on the screen is formed at the point O. The next dark fringe below point O is formed at point P. से थोड़ा सा ऊपर कीजिएगा अच्छा जी, एक सेकंड रुको, ऊपर जाने से पहले मुझे एक बात बताओ। सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, रट्टे रट्टे वाली चीज है, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज है, ब्राइट स्पॉट क्या होगा? सेंट्रल ब्राइट स्पॉट पे पाथ डिफरेंस फेज डिफरेंस क्या होगा? फर्स्ट डार्क स्पॉट पे, सेकंड ब्राइट जीरो स्पॉट होता पे, है ना। देन जीरो क्या चीज? जीरो पाथ डिफरेंस, जीरो लैम्डा, जीरो फेज डिफरेंस, राइट? 0 डिग्री जी का। सर। व्हाट अबाउट द फर्स्ट डार्क फ्रिंज? 0.5 होता है आई गेस। ओके, पॉइंट 0.5 फाइव। होता है ना। ओके, पॉइंट पॉइंट फाइव फाइव लैम्डा। ओके, एंड डिग्रीज? 180। वेरी गुड। क्यों 180? तुक्का लगा रही हूँ सर थोड़ा तो तुक्का वैसे बेसिकली। वो नहीं याद था मुझे वो डिग्रीज में नहीं याद था पर 0.5 लैम्डा याद था। ब्रो 0.5 लैम्डा है ना। अब आपको पता है कि मैथ्स के अंदर ट्रिग्नोमेट्री आपने पढ़ी है, आपको पता है कि भाई हाफ वेव कितनी होती है, कितने एंगल को कॉरस्पॉन्ड करती है? साइन वेव अगर है, सो अगर साइन वेव हाफ है, सही है, तो वो कितने हाँ एंगल को तो वो बताती है? 180 होती है। 180 डिग्री परफेक्ट हो होती गया, है। परफेक्ट हो भाई, वैसे सोचना होता है। सही ओके, है सही है। फर्स्ट ब्राइट स्पॉट। कौन सा वाला सर? ब्राइट ये फ्रिंज वाला। वाला ये वाला। तो हम्म, ये 1 होगा। 1 लैम्डा का। ओके, फिर 1.5 हम दूसरा 1.5 लैम्डा होगा। ओके वेरी गुड। अच्छा, व्हाट डार्क अबाउट फ्रिंज द वाला व्हाट अबाउट द एंगल? इसमें 360 हो जाएगा। ब्राइट फ्रिंज में 360 डिग्री से पूरा हो जाएगा। ओके, और उस पे जो है वो 360 के बाद 450 होता है आई गेस। है 450। 180 ऐड करना है, 90 नहीं ऐड हाँ करना। हाँ सॉरी 540। 540 540। गुड हो गया, चलो परफेक्ट है। आगे आ जाए। अच्छा, कहानी दे दी कोहेरेंट। कोहेरेंट की कहानी बता दो, व्हाट इज कोहेरेंट? कोहेरेंट में ये होता है कि कुछ तो था फेज आई हाय, डिफरेंस जब फेज पूरा इंटरफेरेंस पैटर्न होता है ना जब कुछ तो था यार कुछ तो इट था। इज बेसिकली Constant कांस्टेंट कांस्टेंट phase फेज। फेज difference. डिफरेंस एंड यस, पाथ डिफरेंस भी होता है ना शायद। नहीं 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 नहीं, कांस्टेंट फेज डिफरेंस, ऑल्दो पार्ट डिफरेंस होगा, कांस्टेंट फेज डिफरेंस या फेज रिलेशनशिप, डिफरेंस बिटवीन the two waves. You have to mention all of this thing. Okay, it's not allowed to write on only constant phase difference. Okay, constant phase relationship भी कहते हैं कभी कभार, बट वो मेनली एक्सेल के अंदर होता है। खैर, ओके आगे आओ। For the two light waves superposing at R, calculate the difference in the path in their path lengths in nanometers for the slits. परफेक्ट हो गया। Path difference. अच्छा, आ रहा है ये रहा। ओके, अब हमने पार्ट डिफरेंस की एक्चुअल वैल्यू लिख रखी है, राइट? सो हम जस्ट लैम्डा के अंदर उस लैम्डा की वैल्यू लिख देते हैं, हमारे पास कहानी आ जाएगी, राइट? सो द लैम्डा इज 660 नैनोमीटर्स। ओके, सो 1.5 लैम्डा, 1.5 और 3/2 दोनों आप कह सकते हो, राइट?
मैंने कुछ बच्चों को ऐसे रट्टा लगवाया हुआ है। सो ये हो जाएगा 1.5 इंटू 660, ओके, नैनोमीटर। सो हाउ मच? तो ये10 to the power आपने कैसे की 6। है? डायरेक्ट 660 से मल्टीप्लाई कर देंगे सर। हाँ, अच्छा हाँ सही है, ओके, नैनोमीटर था उसका यूनिट, ओके। उसको वो उसमें मांगा है, हाँ यूसुफ सही है, बता रहा हूँ। 990 होगा सर। 990, ओके। यूसुफ क्या टेंशन आ गई? तो ये हुआ क्या है? अरे ऐसा मत बोलो यार, तुम बहुत ब्राइट स्टूडेंट हो मेरे बैच के। बोलो बोलो, क्या मसला है? ये तो नहीं सर, समझ ही नहीं आ रही क्या हुआ है। अबे रट्टा है ना ब्रो, रट्टा है भाई। देखो, सबसे पहले तो हमने ये, आपके पास जो है, आपको पता है, आपको इतना पता है कि भाई हमारे पास सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज बनता है, सही है। फिर उसके बाद एक और ब्राइट फ्रिंज बनता है और बीच में डार्क फ्रिंज आ रहे होते हैं, राइट? ऐसे ही चल रहा होता है, जी सही जी है। जी। हमने ये रट्टा लगाया हुआ है कि ऑलवेज वाला केस है, मतलब हमेशा हमेशा ऐसा होगा, कभी चेंज नहीं होने वाला है ये, सही। इस वजह से हमने रट्टा लगाया हुआ है, सही है। इसकी लॉजिक मैंने समझाई, लेकिन लॉजिक समझने में बिल्कुल ख्वार बेकार सी लॉजिक है, तो इसलिए समझने का कोई फायदा नहीं है, सही है। सो सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज होता है, उस पे पाथ डिफरेंस होता है 0 लैम्डा का, और फेज डिफरेंस होता है 0 डिग्रीज का। आपको पता है कि पाथ डिफरेंस बेसिकली क्या नहीं, होता है? तो आपको पता कैसे चला कि आपको डार्क फ्रिंज आखिरी वाला लेना है? आप उससे पहले वाला डार्क फ्रिंज ले लेते। मेरा मेरी जान से बोल रखा है ना पॉइंट आर पे। पॉइंट आर, अच्छा आर पे, अब समझ आ गई, ठीक सही, ठीक। वहाँ हम अपनी तरफ से नहीं ले रहे हैं, ओके, चलो गुड है, ओके। अच्छा, फेज डिफरेंस हमने ऊपर ही लिख रखा है 540 का, सही है, वो आपने लाभ दिया है। चलो आगे आ जाओ। यूसर समझ में आ रहा नहीं उससे कैसे किया जाता है क्वेश्चन? देखो बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल सा। तुम्हें पहले ये रट्टे वाली चीज याद होनी चाहिए। यू फर्स्ट रिमेंबर दिस थिंग, राइट? अगर अगर इसके बाद जो है थर्ड ब्राइट स्पॉट होता तो 2 लैम्डा 720, राइट? और इसके बाद फिर डार्क स्पॉट होता तो 2.5 लैम्डा एंड 900 डिग्रीज, ओके। 900 का फेज डिफरेंस आता के आसपास, राइट, एंड सो ऑन। बस ये ऐसे चलता रहेगा, बस तुम्हें याद होना चाहिए, राइट? और इसकी लेक्चर के अंदर वीडियो तुम्हें मिल जाएगी, आई थिंक इन यंग नहीं, यंग डबल स्लिट वाले एक्सपेरिमेंट के अंदर, ओके। चलो आ जाओ, आगे आ जाओ। कैलकुलेट द डिस्टेंस ओ क्यू क्या फॉर्मूला? एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा। अबे ऐसा शायद कोई, चमाट लगेगा ना, डी साइन थीटा लैम्डा सर इज ओ इक्वल क्यू डिफलेक्शन टू था लगेगी। क्या? ax over d। ओ क्यू था क्या? एक मिनट। ये कोई अच्छी वाली बात नहीं, कोई अच्छा सा बहाना ढूंढ देता बंदा है कवर अप नहीं करने मुझे, के लिए। नहीं मुझे सर, बाहर नहीं, सच में मुझे लगा था कि वो दोनों उसका डिस्टेंस ओके, निकालना है। यस यस यस, लैम्डा डी ओवर ए, ओके ब्रो। यंग डबल स्लिट का एक्सपेरिमेंट चल रहा है ना, सो यंग डबल स्लिट के अंदर वी ऑलवेज हैव टू टेक एक्स इक्वल्स टू लैम्डा डी ओवर ए, राइट? समझ रही ना? एंड अगर डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग वाला होता है देन यू यूज एन लैम्डा इक्वल्स टू डी साइन थीटा, फाइन। अच्छा जी, खैर, सो द डिस्टेंस बिटवीन द स्लिट एंड द स्क्रीन इज गिवन एज 1.8, ओके। एंड this is also given, okay, slit separation and wavelength is also mentioned, okay. So use कर लो भाई। 660, 660 एक्सपोनेंट -9, ओके। एंड आपके पास जो दूसरी वाली चीज आ रही है, वो डी आपके पास आ रहा है 1.8, ओके। ए आपके पास आ रहा है 0.44 एक्सपोनेंट -3, हाउ मच? 2.7 × 10⁻³ 2.7 एक्सपोनेंट -3। नाउ अब यहाँ पे देख लो ओ क्यू का डिस्टेंस क्या आ रहा है बेसिकली, राइट? सो ओ एंड क्यू इज दिस डिस्टेंस, राइट? और हमने भी यही निकाला एग्जैक्टली, राइट? अगर वो तुमसे कह देता ओ टू आर निकालना है, फिर क्या करते? यस, यस। अगर वो तुमसे कह देता ओ टू आर निकालना है, यस, ये चलो अगर मैं और आसान कर दूं, पहले ओ टू पी निकालना है, फिर क्या करती दूसरा? Just into 2। डिवाइडेड बाई टू। फॉर ओ डिवाइड बाई टू, टू क्यों? फॉर एक ओ टू पी, फॉर ओ टू पी, फॉर ओ टू पी, ओके। फॉर ओ टू पी, देखो हमें पता है कि वी आर यूजिंग कोहेरेंट वेव, ओके। कोहेरेंट वेव ऑलवेज प्रोड्यूस अ कंसिस्टेंट pattern, okay. So whatever the distance between OQ, if you have it, you reach OP, okay, getting? सही है। अगर तुम अब तुम्हारे पास देख लो कि भाई ओ टू आर तुमने जाना है, तो तुम्हें कितना डिस्टेंस चाहिए? ओ टू क्यू तुम्हारे पास है, डिवाइड बाई टू करके ऐड कर दोगे उसी के अंदर, राइट? समझ पा रहे हो गाइस? सर, गेटिंग? मतलब उसी वैल्यू को जो है उसे डिवाइड बाई टू करके ऐड करेंगे फिर। उसी के अंदर, हाँ, मतलब ये जो 2.7 है, 2.7 है, यू डिवाइड दैट हम्म। बाई टू,
ओके, सो you'll get Okay. 1 point something 35. ओके, जी जी सर. और उसी को इसमें ऐड कर दोगे, राइट? Okay, बिकॉज दिस okay. इज द डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू सही है. एंड दिस इज द डिस्टेंस ऑफ फ्रॉम क्यू क्यू टू आर ना, तो आप ऐड करोगे सो ओ टू आर पहुंच जाओगे, गेटिंग? खैर, बिल्कुल सिंपल। देखो इसके अंदर ये जो चैप्टर है ना, दिस इज लाइक वेरी सिंपल वेरी इजी, बिल्कुल मैथ्स के हिसाब से कोई मुश्किल चैप्टर नहीं है। फिजिक्स के हिसाब से कॉन्सेप्चुअली थोड़ा सा डिफिकल्ट है, बट हम उसकी डिफिकल्टी को खत्म करके रट्टे लगा सकते हैं, राइट? क्योंकि अभी वैसे समझने का टाइम नहीं है, लेकिन समझने का कोई फायदा भी नहीं है, सही? खैर, आ जाओ, आगे आ जाओ। The intensity of the light incident on the double slit is increased without changing the frequency. Describe how the appearance of the fringe after this change is different and similar to their appearance before the change. हम्म। अच्छा जी, मैंने आप लोग को बता रखा है कि अपीयरेंस के अंदर कितनी चीज आती है? फ्रिंज सेपरेशन, सही है, सेपरेशन, ओके, और ब्राइटनेस एंड डार्कनेस। इज दैट क्लियर? अब इन्होंने क्या बोला है? इन्होंने कहा द इंटेंसिटी ऑफ द लाइट इंसिडेंट ऑन द डबल स्लिट इज इंक्रीज्ड विदाउट चेंजिंग द फ्रीक्वेंसी, विदाउट चेंजिंग द वेवलेंथ। इसका मतलब है सेपरेशन डिपेंड करती है, सेपरेशन वाज एक्स, राइट? यूसर सुन रही हो? यूसर आसपास हो? जी जी सर सुन रही हूँ. Okay, so without changing the x mean, acha, x is a separation, slit separation, okay, and slit separation depends on the lambda d and a, right? You're not changing the frequency, meaning you're not changing the lambda d and a is are also same, right? So this means your separation remains the same, right? Previous case के अंदर जो separation है, अभी वाले case के अंदर जो separation है, remains the same, right? Now doubling the amplitude, okay, intensity, doubling the intensity, um अच्छा जी, on the double slit is increase, okay. 4a squared, right? You don't have to give the value, by the way. 8 हो जाएगा, 4 नहीं होगा. It would be 8, okay. The intensity of the light incident on the double slit is increased. They didn't mention it, okay. They didn't mention any factor of like the doubling or tripling or quadruplating, okay. So increase without changing, okay. So now your bright fringe will be brighter, okay. योर ब्राइट फ्रिंज विल बी ब्राइटर बिकॉज जो एम्पलीट्यूड है, जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रही है, वो उसके अंदर जो है आपके पास जो एम्पलीट्यूड आ रहा है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में ज्यादा आ रहा है. सो लेट्स से पहले आपके पास जो दो एम्पलीट्यूड थे वो इस तरह से थे, राइट? सो दे फॉर्म लाइक दिस, राइट? अब जो दो एम्पलीट्यूड आ रहे हैं वो इस तरह से आ रहे हैं, सो दे अपीयर लाइक दिस, ओके. सो अब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस जो है वो आपके पास और ज्यादा हो रही है, बट आपके पास जो है डार्क फ्रिंज के अंदर कुछ भी नहीं, बिकॉज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के अंदर तो ऑब्वियस सी बात है, इफ यू इंक्रीज द एम्पलीट्यूड, सो दैट एट द पॉइंट ऑफ डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पॉजिटिव और नेगेटिव एम्पलीट्यूड कैंसिल आउट कर देंगे एक दूसरे को. इज दैट क्लियर बच्चों? इज दैट क्लियर गाइस? सो सेपरेशन, ओके, of the fringes remain the same. पहली बात हो गई, सही हो गया. देखो हमेशा 3.3 नंबर देगा, ऑलवेज यू हैव टू राइट द 3 पॉइंट, सेपरेशन, डार्कनेस, ब्राइटनेस, खत्म. सही है. द सेकंड थिंग इज darkness remain the same, okay. अच्छा जी, and brightness will be increased, okay. That's it, okay. चलिए आगे आ जाइए. The light of wavelength 660 nanometer is now replaced by a blue light from a laser. State and explain the change, if any, that must be made to the separation of the two slits, so the fringe separation on the screen is the same as it was for the light of wavelength 660 nanometers. हम्म. अच्छा जी, ब्लू लाइट की वेवलेंथ कितनी होती है? सर याद नहीं है मगर कम होती है इससे. अल्लाह, अच्छा चलो इतना काफी है. 400 के आसपास हम लगा लेते हैं, हाँ फोर ओके. हंड्रेड 412 और कुछ इस तरह से होती है. अच्छा इतना याद है. सही है. ओके. थोड़ा सा याद है सर. अच्छा जी, स्टेट एंड एक्सप्लेन. अच्छा, अब नाउ यू आर चेंजिंग द वेवलेंथ, राइट? सो इफ यू आर चेंजिंग वेवलेंथ द डिक्रीज हो गई वेवलेंथ, है. हाँ वेवलेंथ वेवलेंथ डिक्रीज हो गई डिक्रीज है. हो गई है, डायरेक्ट प्रोपोर्शन आ रहा है, सो एक्स भी क्या हो हम्म. जाएगा? भी डिक्रीज हो डिक्रीज हो जाएगा. गया. वेरी गुड, हो गया, सही है. अच्छा जी, इससे इन एनी, ओके,
slit so that the fringe separation. अच्छा, अब इन्होंने क्वेश्चन में क्या पूछा है कि स्टेट एंड एक्सप्लेन द चेंज इफ एनी दैट मस्ट बी मेड to the separation of the two slit so that the fringe separation on the screen is the same. Okay, so basically when you change the wavelength, when you decrease the wavelength, the fringe spacing decreases. Okay, this goes down, right, or this went down. Okay, but you have to take it up for equal to the previous value जो कि previous वाले पार्ट में था, तो उसके लिए आपको इसको क्या करना पड़ेगा, इसको आपको डिक्रीज करना पड़ेगा, slit separation को डिक्रीज करना पड़ेगा. This will increase the separation to the previous value. Is that clear? जी सर. परफेक्ट हो गया, सही है. सो आप कह दोगे कि भाई सर अम, आप एक बार हमें वो बता सकते हैं वो जो वैल्यूज होती हैं ब्लू लाइट की और रेड लाइट की? ये लिखी हुई तो है, ये रट्टा लगा लो. देखो, विजिबल स्पेक्ट्रम जो होता है वो तकरीबन 650 660 से जो है ना, ये रेड के आसपास होता है, राइट, और ये ब्लू ब्लू की के आसपास होता है. तकरीबन 400 400 300 के आसपास होती है, राइट, तकरीबन. और सही रेड है. की? 650 660 670 680 ये सब रेडिश कलर आ रहे हैं. सही है, जितना ज्यादा वेवलेंथ इंक्रीज करोगे उतना इंटेंसिटी बढ़ जाएगी कलर की, राइट. बस ये कॉन्सेप्ट है. यू डोंट हैव टू मेमोराइज द एग्जैक्ट वैल्यू, क्योंकि वो है क्या बोलते हैं, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, राइट. सो यू डोंट हैव टू रिमेंबर द एग्जैक्ट वैल्यूज, बट यस यू शुड नो द सम वैल्यू के वो उसको रेफर कर दे, दैट्स इट. ओके. ब्लू लाइट हैज shorter wavelength, so the separation of the slits, yeah, between the slits, so the separation between the slit uh, decreases. पहली बात हो गई. ओके, फिर आपने कहा कि भाई to increase it to increase it to the previous value, uh, slit separation. अच्छा सॉरी, यहाँ पे गलत हो गया. सेपरेशन बिटवीन द फ्रिंजेस मुझे लिखना था, फ्रिंजेस. ओके. Decreases to increase the previous value, to increase it to the previous value of the fringe spacing, the slit separation must be decreased. Okay. ब्रो समझ गई है ना, यूसरा समझ गई हो ना आप, प्लीज बताओ. जी जी सर, समझ आ गया. ओके परफेक्ट, आ जाओ भैया, आगे आ जाओ. एनीवन वांट टू ट्राई द इलेक्ट्रिसिटी? Sir, can I try? यस, गो अहेड. A network of three resistors of resistance R1, R2, and R3 shown in figure 6.1. The individual potential difference across the resistors are V1, V2, and V3. The current in the combination of the resistors is I, and the total potential difference across the combination is V. Show that the combined resistance R of the network is given by R equals R1 plus R2, R3. So we'll ओके. use Kirchhoff law. ओके, सो व्हाट द किरचॉफ लॉ सेज बाय द वे? Sir, EMF equals V1 plus V2 plus V3 or VT. ओके. अच्छा, since it is a show that question, the total potential is not applied, by the way, but we can assume, if you take if you are taking vt as a total, then you have to say that vt is the emf across the resistors. Okay. Okay, chalo. Now we know that V1 is equals to IR1. Okay. V2 is equals to IR2. Okay. And V3 is equals to IR3. Okay. And V total is basically IR total. Okay. Now you are substituting. So you can just do I R total is equals to IR1 plus IR2 plus IR3. Okay. Then you can take I common. Okay. And cancel it out. Okay. R1 plus R2
plus R3, okay, and okay, this goes off, you'll be left with R1 plus R2 plus R3. Okay, this is a show that question. Okay, ये shown कह लो सही, चलो आगे आ जाओ. A battery of electromotive force 8 volts and negligible internal resistance is connected to a thermistor. A switch X and two fixed resistors are shown in figure 6.2. Resistor 1 has a resistance of 6 kilo ohms and resistor 2 has a resistance of 4 kilo ohms. जनाब, अच्छा जनाब, okay, fine. अच्छा, switch is open. Switch X is open, calculate the potentials. Okay, if the switch as X is open, so this means you have to imagine this circuit as it at this part is not present. Okay, yes, what will you do? There we can find the total current. Wait, you can Uh, direct do the ratio method, no? No? They're yeah. just asking about the R1 now. So you know that the total voltage which is 8 volt. Okay. So 8 volt is across the total resistance, that is 10 kilo ohms. Okay. So if you are working across 6 kilo ohm, right? 6 kilo ohm. So what will be the voltage X? So you can just do 6 times this divided by 10 gives you X, which is 4.8. Yes. Yes. So, by the way, we have to do R1 के cross ना, R1 6 है, ये 4 है. Fine. चलिए आगे आ जाइए. Switch X is now closed. The resistance of the thermistor is 12 kilo ohms. Calculate the current in the battery. Okay. So Um, current in the battery. Okay. Yes. क्या करेंगे? Here you अच्छा. find By the total way, 12. resistance. हाँ हाँ. Yes. Okay. Then you can V over R. I mean So I is equals to V. 1 over 4 plus 1 over 12. Okay. And then 3 over 12. 4 over 12. 12 over 4. 3. Okay. So यहाँ से resistance अब इसकी आ गई आपके पास 3 kilo ohms की, right? Now you have the circuit like this with this resistor, okay, and another resistor in series with the previous one, okay. So this one is 3 kilo ohms, okay. This is basically the combination of this is basically the parallel combination of R2 and the parallel combination के लिए हम ये sign लगाते हैं and the thermistor RT, okay, and this is R1 only, R1, okay, and ये आपको connected है 8 वोल्ट की बैटरी से, right? सॉरी, उल्टे लगा दिए. ओके, सही है. सो कर दो भाई. सो अब आपके पास ये आ रहा है 6 किलो ओम्स. ओके. सो V इक्वल्स टू आई आर. सो 8 डिवाइडेड बाय 9 एक्सपोनेंट 3 इज इक्वल्स टू I. So you get 8.9 exponent negative 4. 8.9 exponent negative 4. Fine. Okay, let's move on. The switch X in the circuit in B remains closed. The temperature of the thermistor decreases by reference to the current in the battery state and explain the effect if any of these decrease in temperature of the power produced by the battery. Sir, the resistance in the thermistor increases, so the total resistance in circuit increases, current flow decreases, or power power will decrease. है. अच्छा, अगर पैरेलल के अंदर लगा हुआ है, पैरेलल के अंदर थोड़ा सा इशू हो सकता है. अगर हम पैरेलल के अंदर देखें, सो इफ यू आर इंक्रीजिंग इट, सो चलो ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाएगी, करंट डिक्रीज हो जाएगा, पावर डिक्रीज हो जाएगी. फाइन. सो increasing the temperature, okay, sorry, decreasing the temperature, decreasing the temperature, um, increases, yeah, increases the resistance
पहली बात हो गई सही, उसके बाद क्या होगा? which, अच्छा, पहले तो आप ये लिखो, इंक्रीजेस द रेजिस्टेंस ऑफ थर्मिस्टर, सही है, which increase the overall resistance, okay, resistance, okay, which increase overall resistance of the circuit, okay, um, and decreases the current, okay, so power will be decreased, okay. चलो, लास्ट क्वेश्चन भाई, लास्ट क्वेश्चन। अच्छा जी, तुमसे कह रहे हैं, आ जाओ इरफान, यू हैव टू ट्राई। Yeah, okay. A nucleus of cesium-137 decays by emitting a B negative particle to produce a nucleus of element X and an antineutrino. The Okay. decay is represented by, okay, Hmm. state the number of state the number represented by each of the following letters. Okay, so first solve this one. Okay, so P remains zero, right? Because beta don't have Yeah, any nuclear number. So P is zero. R would be negative one because it's a beta particle. And X remains, Q remains the same, 137, right? And S would be 54. 56, not 54. Wait, isn't it minus? No, wait. So over here is a minus sign, no? So 55 is Oh, equals okay, to fine. S Okay, yeah. plus X minus negative one, right? Okay. Yeah, okay, so 56, yeah. Okay. State the name of the class group of particles that includes a beta negative particle and the antineutrino. That's leptons. Okay. Very good. Okay. Particle Y has a particle Y has a quark composition of three down quarks, where D represents down quark. Okay. Particle Z has a quark composition of anti up and down. Show the charges of the particles Y and Z, that of Y and Z. So three down, that means So a minus down one over is three. negative 1 over 3, yes. So, Yeah. So minus 103, minus 103, minus 103. yes, yes, And for the anti up, that's minus 203, right? yes. Okay, so minus 203, Mm-hmm. minus 103. This is y, and for z, it is minus 2 over 3, and then negative 1 Yeah, over 3. Give me one negative 1 from this side and negative 1 from that side. Okay, fine. yeah. Okay, आगे आ So can जाओ. I explain which particles is a meson and which particle is a baryon? This is something that may confuse you. You should know that a baryon always contain three quark, a meson contain two quark. This is the first thing. The second thing, a baryon always contain either three straight quarks or three antiquarks, all. Okay. But a meson contain one quark and other antiquark. Okay. So this should be baryon because it has one quark and another antiquark. Okay. And this should be baryon because it has all the quarks. Okay. If it has all the antiquarks, it also considered as the baryon, but it would be anti-baryon, but fine. Okay. So meson would be Z. Okay. As it is made up of made up of a quark and an antiquark. Okay, and Y is baryon, baryon as it contain all the quarks. Yes, please बोलिए.
Sir, if you say meson has two quarks and baryon has three quarks, will you still No, get the no, no, marks? no. It's like it's not acceptable because baryon, like baryon, the identity of the baryon always it should contain one antiquark and one quark. Okay, clear? This is let me show you. वैसे इन्होंने शायद पता नहीं लिखा हो या नहीं लिखा हो, I don't know, but ये mainly ये होता है, सही है? Because consist of a quark and an antiquark. Look, सही है ना? समझ रहे हो आप? So ये always वाला हिसाब किताब है. You just need to memorize it, okay? The way they are, like it's a fact, okay? Clear हो गया? Now, अच्छा. By the way, you have to try. We did May June 22. Okay, try. 2022. इमाद मैंने मुश्किल वाले पेपर भेजे थे, क्या वो कभी सॉल्व किए? मुश्किल, ज्यादा मुश्किल थे, कम थे, कैसे थे? Sir, which ones? I don't remember. I share you the link of the PU board. Oh, sir, I didn't try it, but I saw it Okay. was hard. They are very hard. Okay. Okay. So, but yep, they will improve your understanding. 2020, 21 you have to try. Okay. May, June. That's it. And also try 23 for this variant. Fine. So, okay, fine. That's it for today, guys. Inshallah, we'll do a next paper tomorrow. Okay. So we are basically done till 2022. We are left with 23 and 24. Okay. So just the 2 years are left. Okay. In 12 year solution solving past papers. Okay. So, Chanaji, bas, that's it. Chanaji. Sir, Okay, मेरा एक guys. क्वेश्चन है, Mm-hmm. क्वेश्चन नंबर सिक्स बी का पार्ट टू के अंदर, हाउ डू यू नो यू हैव टू यूज किलो ओम्स? यहाँ पे इससे ऊपर वाला, ये वाला किलो ओम्स वाला वाला जो 8.9 वाला, जी वाला, आपको कैसे पता आपको यहाँ पर किलो ओम्स इस्तेमाल करना है? ऊपर जहाँ पर आपने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला वहां पर आपने किलो ओम्स क्यों नहीं लिया? ये तो है। अच्छा, मैंने लिखा तो नहीं आपने है। कन्वर्ट क्यों किया? अरे मेरी जान, ये रहा किलो ओम, ये लो। 6 के साथ किलो ओम लगा हुआ है, 10 के साथ भी किलो ओम लगा हुआ है, कैंसिल हो गया। समझ रहे हैं ना ब्रो? ओह कैंसिलेशन अच्छा, की वजह ठीक से है ठीक मैंने नहीं लिया था, इस वजह से मैं इसको वो कर दिया था। बट यू हैव टू राइट, लिख रहे होगे तो उसको लिख देना प्लीज, ऐसे होशियारी मत नाप देना। ओके। ठीक है। ओके, इमाद आप क्या कह रहे हो? sir, will you solve March 2025? यस, इरादा तो है मेरा, करना है, बिल्कुल करना है। सही हो गया, चलो। चलिए। ओके गाइस, टेक केयर बच्चों, अल्लाह हाफिज। Love us. लास्ट हाफिज।